Namaskar, welcome to Indian News. This is Priyal Mishra, your news presenter for the day. Let's take a quick look of today's headlines. India's major victory at Grammy Awards. Fate special train departed for Ayodhya. Approval of rupees 910 crores for Khandwa-Akola railway line. Women from Bhilai held captive in Oman. Chhattisgarh's in charge Sachin Pilot conducted a visit to Ambikapur, assessing the meeting venue and the route for the Bharat Jodo Nyaya Yatra. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra will commence on February 8 from the bordering areas of Raigad. The Nyaya Yatra is set to reach Ambikapur on February 13, where a massive public meeting and rally are scheduled. In preparation for this, Sachin Pilot held a meeting with Congress officials, opposition leader Charan Das Mahant, Pradesh Congress Committee President Deepak Baij, All India Congress Committee Secretary Vikas Upadhyay, former ministers Jai Singh Agrawal, Shiv Kumar Daharia and Prem Sai Singh Tekam, along with former legislator Gurumukh Singh Hora, were present in the meeting. A meeting regarding the Lok Sabha elections was held at the state office in Kushabhau Thackeray complex, where a large number of BJP officials and legislators participated. National General Secretary Shiv Prakash addressed the workshop, stating that everyone has been assigned responsibilities for the preparation of the Lok Sabha elections and it needs to be fulfilled at the state and booth levels. Every worker is expected to carry out their responsibilities just like they did in the assembly elections. Chief Minister Vishnu Dev Sai congratulated the officials, emphasizing the goal of winning all 11 seats in Chhattisgarh in the upcoming Lok Sabha elections and supporting Prime Minister Modi. Cabinet Minister Brij Mohan Agrawal mentioned that officials have been given responsibilities considering the Lok Sabha elections. Legislators were also briefed on the questions to be asked in the Rajya Sabha. क्या दायित्व है और एक अच्छे विधायक बनने के लिए हमें क्या-क्या काम करना चाहिए, जो पार्टी के विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ में हमारे कैसे संबंध होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ में आज विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश मोहन जी को और सचेतक लता उसेंडी जी और सुशांत शुक्ला जी को घोषित किया गया है। विधायक दल की बैठक में माननीय विधायक गणों के जो सुझाव थे वो लिए गए। विधायकों को ये भी बताया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर में उनको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बजट चर्चा में कैसे भाग लेना है, प्रश्न कैसे लगाना है, ध्यानाकर्षण कैसे लगाना है, किन विषयों में सत्ता पार्टी के विधायक भाग ले सकते हैं, किन विषयों में नहीं ले सकते, इन सब चीज़ों की जानकारी विधायकों को दी गई है और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया है। और विधायक दल की बैठक में माननीय शिव प्रकाश जी के साथ साथ हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी ने भी संबोधित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया। India has achieved significant victories at this year's Grammy Awards held on Sunday in Los Angeles. Singers Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus and Lana Del Rey secured multiple Grammy Awards in the program. Additionally, Indian musicians made a mark at the Grammy Awards 2024. Singer Shankar Mahadevan and tabla player Zakir Hussain, along with two other musicians, received awards. Shankar Mahadevan and Zakir Hussain's band Shakti won the award for the Best Global Music Album for the moment. It's worth noting that this album includes a total of 8 songs. The Grammy Awards are the world's most significant awards for music. The event took place at the Crypto.com Arena in Los Angeles. And Zakir Hussain, he just had on the Grammy.
So we can't speak. Thank you, boys, and thank you, God, family, friends, and India. We are proud of you, India. Last but not the least, this award is dedicated. I'd like to dedicate this award to my wife, whom my every note of music is dedicated to you. Love you. Thank you, thank you, thank you, Parivar. Thank you everyone. Thank you, Recording Academy, for recognizing us. Thank you. A day before the Legislative Assembly session, the Chhattisgarh government issued transfer orders for the police superintendents of 26 districts, conducting a significant reshuffle in the police department. On Tuesday night, the transfer orders were issued appointing Santosh Kumar Singh as the new police superintendent of the capital, Raipur. Jitendra Shukla is appointed in Durg, Ashutosh Singh in Mahasamund, Shashi Mohan Singh in Jashpur, Rajneesh Singh in Bilaspur, Shalabh Kumar Sinha in Jagdalpur, Jitendra Yadav in Bijapur, Dr. Ankita Sharma in Sukma, Surat Singh Parihar in Korea, Girja Shankar Jaiswal in Mungeli, Vivek Shukla in Janjgir Chapa, Vijay Agrawal in Sarguja, Sadanand Kumar in Baloda Bazar, and Siddharth Tiwari as the new police superintendent of Korba district. Heavy snowfall occurred on Sunday in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Ladakh and Uttarakhand, leading to the cancellation of all flights departing from Srinagar. 7 trains have also been cancelled and the Srinagar-Jammu highway is closed due to a landslide. In Himachal Pradesh, more than 500 roads are blocked due to heavy snowfall in places like Manali, Kinnaur, Dharampur, Kufri and Kelang. Several areas are affected by power and water supply disruptions. The meteorological department has issued a yellow alert for Lahaul Spiti, Kinnaur, Shimla, Kangra, Mandi and Kulu, indicating heavy rainfall in the next 2 days. Meanwhile, in the Delhi NCR region, there was heavy rain on Sunday morning. According to the weather department, rain is expected on February 5th in Rajasthan, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. The cold wave continues to affect states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Bihar. On the other hand, Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura may experience rain until February 6th. Union Minister Anurag Thakur flagged off the Faith special train set to operate from Andorra to Ayodhya. During this event, Union Minister Anurag Thakur stated that the commitment of years has been fulfilled. The construction of the Grand Ram Temple has been completed and the first train from the land of gods, Himachal Pradesh, departed from Ayodhya with groups of Ram devotees. He expressed satisfaction saying, "I flagged off this train from Andorra in Una district of my parliamentary constituency, Hamirpur. Prime Minister Modi has fulfilled a 500-year-long wait. This is a significant victory for Ram devotees and India." वर्षों की प्रतिज्ञा पूरी हुई है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से अयोध्या धाम जी के लिए पहली ट्रेन राम भक्तों के जत्थों के साथ रवाना हुई। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना के अंब इंदौरा से इस ट्रेन को रवाना किया गया, जो ऊना में, फिर आनंदपुर साहिब में और फिर आगे चलते चलते कीरतपुर साहब से लेकर चंडीगढ़ होते हुए, अम्बाला होते हुए हमारी ये ट्रेन अयोध्या धाम तक पहुंचेगी और राम भक्तों को रामलला के दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। और देवभूमि से मैं यही कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 500 वर्षों का इंतजार खत्म करवाया है। राम भक्तों के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय है। देश में जो सद्भावना का भाव, भाईचारा जो बड़ा है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री ने तो 11 दिन का अनुष्ठान रखा था और 11 दिनों तक अन्न तक ग्रहण नहीं किया। पश्चिम दक्षिण भारत के सारे राम मंदिर में, अधिकतर राम मंदिरों में उनका जाना हुआ और जिस तरह से
जो रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार उनको करना था वो सब किया प्रधानमंत्री। Let's take a quick break. Stay tuned with Indian News. हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। The budget has once again provisioned the commencement of the Khandwa-Akola rail line starting from Burhanpur, Madhya Pradesh, for which Member of Parliament Gyaneshwar Patil expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi. During a press conference, MP Gyaneshwar Patil stated that in the previous budget, rupees 888 crores were approved. But this year, due to the relentless efforts of Prime Minister Narendra Modi, the Central Finance Minister has approved rupees 910 crores for the Khandwa-Akola railway line. He added that the long pending issue of the railway line from the forest land has also been resolved, and soon the Khandwa-Akola line will start, bringing a gift to the people of the Burhanpur-Khandwa Lok Sabha constituency. देखिए, ये बजट जो है, ये बजट पूरे देश के गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लेकर, हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने को लेकर,
हमारे समूह की लाडली दीदियों को लखपति बनाने का जो निर्णय किया गया है, और 10-20 लाख नहीं 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और चाहे मातृशक्ति हो, चाहे किसानों के कल्याण की बात हो, चाहे गरीबों के कल्याण की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले, रोजगार देने वाले बनाने की बात हो, वो चारों वर्गों को विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अपनी सरकार ने इस बजट में विशेष रूप से उनका ध्यान रखा है। तो मैं सभी जनता की तरफ से, खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और महू से लेकर तो अकोला ब्रॉडगेज के उन्नयन के लिए 910 करोड़ रुपए, पिछली बार 888 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और इस बार 910 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत A severe road accident occurred in the rural areas of Kanpur, resulting in the death of 6 people. The others injured individuals have been admitted to the hospital. On Sunday late night, a road accident in Kanpur Dehat took the lives of 6 people. 2 children were rescued by the police. At the time of the accident, there were 8 people in the car, all returning from a tilak ceremony in Itwa. Around 2 a.m., the car went out of control and plunged into a ditch near Jagannathpur village on Sandalpur Road in Sikandra. After receiving the information, the police reached the spot and with the help of villagers, evacuated everyone from the car. They were sent to the Sikandra CHC where doctors declared 6 individuals dead. देखिए, आज करीब 2 बजे रात को थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा संदलपुर रोड पर जगन्नाथपुर गांव के यहाँ एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो अनियंत्रित होके पलट गई थी और पलट के ये जो चौड़ा और गहरा नाला यहाँ पर जो है उसमें गिर गई थी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 बच्चों को बचा पाए थे। बाकी इसमें जो बचे 6 लोग थे जो गाड़ी में फंसे हुए थे और उनकी मतलब फंसने के वजह से मृत्यु हो गई। ये सभी लोग जो है थाना डेरापुर में मुर्रा गांव और थाना शिवराजपुर कानपुर नगर के निवासी है। ये लोग सभी लोग फूंक गांव इटावा क्षेत्र में एक तिलक समारोह में शामिल होकर वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त देर रात को ये घटना हुई है। Misuse of ambulance vehicles for taking patients to the hospital is becoming common as they are now being used for transporting goods. In a recent incident in the tribal block Khaknar of Burhanpur district, the community health center's ambulance was seen being used to bring chairs for a health workers meeting. The ambulance, which was made available by the former legislator Nidhi Sumitra Devi from Nepan Nagar, was initially intended for transporting patients to hospitals. However, due to the arbitrary actions of health department's officials, the ambulance is now being used to bring chairs. In Madhya Pradesh, Agar Malwa district, 3 students on their way to take the 10th grade exams met with a severe road accident with 2 of them reported to be in critical condition. On Monday in Barwani, 3 students from the 10th grade were travelling on a bike to the exam center when they became victims of a road accident. 2 students are in critical conditions receiving primary treatment at Barwani's government hospital before being referred to the Agra district hospital. According to the Barwani police, the students Durgesh, Arjun and Rajesh from Ran Arya village were injured in the road accident. The weather in Chhattisgarh will remain clear on Monday. There is no indication of significant changes in the maximum temperatures during the night and day over the next 4 days.
According to the Meteorological Department, Ambikapur recorded the lowest minimum temperature in the state on Sunday. The mercury here dropped to 8.6 degrees Celsius. Meanwhile, Dongargarh recorded the highest maximum temperature at 32.2 degrees Celsius. Sarguja division remains the coldest in the state. Although relief from intense cold during the day has been experienced, nights are still chilly. The minimum temperature in Korea district was 10.7 degrees and in Balrampur it was 10.2 degrees. A significant case has emerged from Durg district where a municipal councillor is charged with a crime for contesting election based on a fake caste certificate. The Supela police have registered a case of fraud against Salman, the councillor and deputy chairman of Ward 35 Sharda Para Bhilai Municipal Corporation. Salman, a resident of Ranaira village in Chawani Ward 35, is accused of submitting a fake caste certificate for the municipal elections. Bhojraj Sinha, the opposition leader in Bhilai Municipal Corporation, and Chanda Yadav, councillor of Ward 35, filed an FIR at Supela police station. They informed the police that in the 2021 municipal elections in Bhilai, engineer Salman contested for the councillor position using fake and forged documents, winning the election under the OBC category. आज मोहम्मद सलमान जो कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा थाना सुपेला में की गई थी, जिसमें जांच की गई और आज FIR दर्ज हो चुका है। हम ऐसे फर्जी लोगों की पार्षदी बर्खास्त करने की मांग संभाग आयुक्त से, कलेक्टर साहब से और ये थाना सुपेला का मामला था। यहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष भिलाई नगर के हैं, उन्होंने शिकायत की थी थाने में कि जो एक सिटिंग पार्षद हैं सलमान, वो फर्जी जो है जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके OBC का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तारतम्य में शिकायत पर से SDM से उसका प्रतिवेदन लिया गया था। SDM प्रतिवेदन में आया है कि उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जा रहा था जो प्रमाण पत्र वो फर्जी है। इस आधार पे वहाँ पे FIR किया गया है और उस पर कार्रवाई की गई है। किन धाराओं पे कार्रवाई है? उसमें 420, 464, 68, 71 पे कार्रवाई। A woman from Durg, Chhattisgarh has been held captive in the Arab country, Oman. The woman had gone there to work as a housemaid. She is now demanding 3 lakh rupees from her relatives as ransom. She has released a video seeking help. Jogita Deepika, a resident of Kursi Par Bhilai, went to Oman for employment. Deepika has posted a video on social media revealing that she was deceived and captured there. In the video, Deepika explained that she was brought there under false pretenses and turned into a captive. She also mentions facing physical assault and receiving threats to be sold. Deepika's husband Yogi Mukesh revealed that she has been in Oman since May 30. She was sent for a housemaid job through a placement agency in Kerala. Kursi Par resident Mullah Muhammad Imran Khan and Hyderabad resident Abdul Naeem Khan had promised to arrange a job for cooking. Mukesh has sought help from Vaishali Nagar MLA Rikesh Sen to rescue his wife. That's all for today. Thank you and have a great day.